Hello students, welcome to Gitishree Study Zone. So आम्ही पढ़ुथिले प्लस टू सेकेंड ईयर फिजिक्स टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो प्रीवियस क्लास रे मु एपर्यंत सारी देथिली. आज पढ़िबा आमे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. So electric lines of force is defined as the path straight or curved along which a unit positive charge is urged to move when free to do so in an electric field. माने गोटे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुड़िकर पाथ को भाव सीधा किंबा वक्र भाव होइथाय. तपरे जो गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अर्ज करा जाए कोन पाए फ्रीली मूवमेंट करियो पाए. So the direction of motion of unit positive charge gives the direction of line of force. कौन है the direction of motion in गोटे unit positive charge रो direction की देता है line of force देता है. तापर हमें पढ़ना properties of electric lines of force. Electric lines of force रो property विषय रे हमें पढ़िबा. First property कौन? They never cross each other. ସେମାନେ परस्पर को कदापि क्रॉस करती नहीं, अतिक्रम करती नहीं. सेकेंड प्रॉपर्टी कौन? दे नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. से कदापि क्लोज्ड लूप फॉर्म करती नहीं. दे एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ସେମାନେ कोठी स्टार्ट होती, स्टार्ट और एंड कोठी होती सरफेस रो कंडक्टर पे. अच्छा कंडक्टर कौन? कंडक्टर होची ना कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. कंडक्टर होची गोटे एमिट मटेरियल्स बा सब्सटेंस जोटा सेमानक मध्य रे विद्युत प्रवाहित हेबा पई अलाउ करे. तापर हेदला प्रॉपर्टी 4 होची लाइंस ऑफ फोर्स फॉर यूनिट एरिया represent magnitude of the intensity. माने पर यूनिट एरिया प्रति लाइन्स ऑफ फोर्स केते इंटेंसिटी रो मैग्नीट्यूड को एठी हमरा रिप्रेजेंट करे. तापर प्रॉपर्टी 5 होची नंबर ऑफ लाइन्स originating or terminating is proportional to the magnitude of charge. या कोड प्रोपोर्शनल होय है ना नंबर ऑफ लाइन्स originating or terminating कौन ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को प्रोपोर्शनल होता है. तापर देखिबा हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एथि टू पॉजिटिव चार्ज अछि कौन कौन ना Q1 एंड Q2 दीटा पॉजिटिव चार्ज अछंती. तो एथि जदि Q1 अछि एथि प्लस Q2 अछि माने दीटा इक्वल चार्ज अछंती, दीटा लाइक चार्जेस अछंती. जदि दीटा लाइक चार्जेस अछंती ताहले सेमाने दी जन को कोन करबे रिपेल करबे. आमे पढ़थिले लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर. तो एम एथि कोन? एम होची थी न्यूट्रल पॉइंट. Equal charges, same number density. So when the charges are unequal, m shifts towards the smaller charge. अच्छा जितेबेले चार्ज टा अनइक्वल अछि m काहे कि शिफ्ट हे जाउछि स्मॉलर चार्ज आडको, काहे कि इक्वल थिला बेले शिफ्ट होनी. काहे कि ना पिला माने एथि सुनो the electric field due to the larger magnitude of the charge will become less at more distance. माने चार्ज रो लार्जर मैग्नीट्यूड हेतु इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक दूरतारे लेस हेजिवो माने कम हेजिवो. बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉलर चार्ज विल बी मोर एट द स्मॉलर डिस्टेंस. एवं स्मॉलर चार्ज हेतु इलेक्ट्रिक फील्ड कम दूरतारे लार्ज हेजिवो अधिक हेजिवो. So the neutral point always near or closer to the smaller charge. बुझी पारिलो काहे कि इक्वल चार्ज टा m shifts towards the smaller charge. काहे कि इक्वल चार्ज हैला, काहे कि अनइक्वल चार्ज हैला, काहे कि इक्वल चार्ज हैलानी. बुझी पारिलो
तार कारण होछि या जतेबेले चार्ज रो लार्जर मैग्नीट्यूड थिबो एवं इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक दूरतार लेस होइजिवो तापर जतेबेले स्मॉलर चार्ज हेतु इलेक्ट्रिक फील्ड कम दूरतार लार्जर होइजिवो so that's why the neutral point is always near or closer to the smaller charge बुझि पालो पिला माने तापर आमे पढिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड रा हमें फार्मूला जानि छ कूलम्ब्स लॉ रे 1/4 pi epsilon naught q upon r square. So since r is the unit vector that is directed from q to q, therefore electric field is equals to kete एठी हम जानि छ force per unit charge. तो एठी सेति पय लिखा है कोन E is equals to F upon Q. Thus, E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. So, formula of electric field due to a point charge. So, ये formula टा मन रखिथिबे पिला माने F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. तापर आमे पढिबा इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन ना an electric dipole or simply a dipole electric dipole को हमें खाली dipole भी कहता हूँ is the name given to point charges of equal magnitude and opposite sign separated by a distance that is small compared to the distance to the point P at which we want to know the electric field and potential field. एटी कहते इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन रो टू पॉइंट चार्जेस एक दूरता द्वारा सेपरेट हुअंती जहां p सहित कोन एज कंपेयर टू डिस्टेंस बहुत स्मॉल हे थाए बुझि पालो सेति पई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और सिंपली ए डाइपोल is the name given to two point charges of equal magnitude and opposite sign. Equal magnitude रे एवं opposite side रे separated by a distance that is small compared to the distance to the point P. एक दूरता जहाँ separate होती जहाँ P सहित दूरता तुलन रे बहुत small होता है. Electric dipole term used for dielectric materials when it is placed in field. बुझ पालो electric dipole कौन? The electric dipole moment. If electric dipole moment होची, electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of magnitude of each charge and the separation between them. And electric dipole moment रो formula होची केते electric dipole moment को आमे P द्वारा denote करूचे तार फॉर्मूला होची AQ. P एठी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड A होची तार एक्सियल लाइन, Q होची directed from केते नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन? An ideal electric dipole is that dipole whose magnitude of the charge tends to infinity while the separation between them tends to 0. कौन एटा ना इलेक्ट्रिक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल जहार चार्ज रो क्वांटिटी कौन वे ना an electric dipole is that dipole whose magnitude of the charge tends to infinity जहार चार्ज रो मैग्नीट्यूड टेंड करे केते को infinity को while the separation between them tends to 0. जेते बेले सेमाननक मध्यरे सेपरेशन केते थिबो 0 थिबो ताले कोन करबो चार्ज रो मैग्नीट्यूड टेंड करबो infinity को. यार फॉर्मूला टा पिला माने मने रखिबो द an ideal electric dipole is that dipole whose magnitude of the charge tends to infinity while the separation between them tends to 0.